Hello everyone. Today I am going to take one more topic from irrigation engineering unit number 2. The topic is hydrology. In that we will be seeing part number 2. So content of the lecture. So what is the content of the lecture? We will be again seeing the brief description of hydrology. We will be seeing the average annual rainfall and its calculations, how we are calculating runoff and catchment area, strange and Binet table and curve, maximum flow discharge and method of calculation, how maximum flow discharge is done and how we can calculate. So in this lecture we will be seeing all these 4 topics one by one. Let's first of all let's see detailed content of the hydrology. So we all know that in hydrology, hydro means water and logy is studying about the property of water. So we all know the hydrology is a science where it deals with occurrence, distribution and movement of water, where on the surface of the earth and below. From where it comes, we all know the process, like from hydrological cycle, water evaporates, forms water vapor and evaporates to the atmosphere, and from atmosphere again it precipitates back to the earth surface. So that concept is known as a hydrological cycle. So we have already seen that topic in that. So we should know that the basic of the what does hydrology means. So in this class we will be mostly seeing about average annual rainfall and its calculation. Already we have seen the in previous lecture that what is rainfall, types of rainfall, what is rain gauge station, and how rain gauge station works. We have already seen that, but today's class we are going to see mostly about average annual rainfall and its calculation, how we calculate the rainfall in the given area or rain gauge station. So it is of mostly 3 types. What are the types are rainfall? First one is arithmetic mean method, second one is Thesian polygon method, and isohedral method. So this very important topic we will be seeing one by one, and it very easy, and I will be explaining you with the examples, so it is very easy to understand. So first one is arithmetic mean method. So what is arithmetic mean method? We all know that small variation in rainfall value measured by the station, this method can be used. Where arithmetic mean method are used where small variations are there, like if consider Gems Polytechnic College. Here in one place its rain is 5 centimeter and 5 mm, and another area is 10 mm. So we can easily find out the average rainfall by the term known as arithmetic mean method. So the P1, P2 and Pn, what are that? That is average rainfall area of station P1. It is denoted as P1, P2 and goes to Pn. So N is what? N is number of rain gauge station where from the catchment area. We all know that highest receiving rainfall area is Montsegram and Cherrapunji in Meghalaya. So where the rain gauge station are fixed, so by the use of arithmetic mean method they find the average rainfall in the particular places. So arithmetic mean method can be found out by the given formula, that is P bar is equal to P1 plus P2 plus Pn upon n. So this formula is basic of that. So that can be cut out to summation of n upon limit of I is equal to 1 pi upon n. So by this formula you can find the arithmetic mean method. Let's do an example, तो हमें पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं. So measured rainfall at 6 rainfall gauges. As we all know, there are 6 rainfall gauges station P1, then the P2, P3, P4, P5 and P6. So this station where the average rainfall is marked, that at P1 there is 1.62 mm of rain and P2 2.15 mm of rain. So already have given. So how will you calculate? By using arithmetic mean method. So let's go to the topic calculation part. So that is P average, that is average rainfall in the area given, summation of Wi into Pi. So what is Wi? Wi is a weight of the gauges, जहाँ पे गेज होता है उसका वजन कितना है, तो वेट इज इक्वल टू 1. सो ओवरऑल वेट इज इक्वल टू 1 एंड द पी आई इज वन स्टेशन वेयर ऑल द डिफरेंट 6 स्टेशन देयर वैल्यूज आर गिवन एज यू हैव सीन दैट समेशन ऑफ डब्ल्यू आई. ओके, सो पी एवरेज कैसे हो जाएगा?
all 6 station को we have to multiply over 1, so we have directly 1 multiplied by the overall sum, means we will keep the sum only. So given station, the values are given 1.82, 2.15, 2.26, 2.28, 1.62, 1.8. so we are going to add this whole area and add and divide by 6, because we have to find the mean value. The mean value, how will you find? The total number of station is given 6, so we will add the whole 6 and we will divide by 6, and the average airfall area will be 1.97 inch. So we can easily find out by arithmetic mean method that how much rainfall has fallen in the particular place. So it is very much important when you will practice this type of numerical. It is very easy to understand. So we have to memorize the formula that P average is equal to summation of Wi into Pi upon summation of Wi. So हमको यहाँ Wi कितना लेना है? Wi summation में हमें लेना है 1 लेना है, तो 1 हम कैसे लेंगे? We all know weight is equal to 1. और हम यहाँ पे P average कैसे निकालेंगे? We all know the mean कैसे निकालते हैं? तो जितना स्टेशन रहता है उसको ऐड करके नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा P एवरेज निकल जाएगा. ठीक है. सो दिस मेथड इज नोन एज अरिथमेटिक मीन मेथड. नेक्स्ट वन इज Thysanian polygon method. What's Thysanian polygon method? Thysanian polygon method. In this method, rainfall recorded at each station given a weightage on the basis of area closest to the station. Means कि जो area है closest to the station है वो उसको weightage ज़्यादा दिया जाता है. सबसे पहले इसको हम समझने के लिए एक plot करते हैं diagram को. As we have seen, we have plotted diagram 1, then 2, 3, 4, 5 and 6. So we have drawn the catchment area. What is catchment area? Where the water comes and stored. When the rainfall comes, water runoff and stored in catchment area. So where rain gauges are installed. So these are the 6 stations where first of all in this method what we do, weightage is given to the area closest to the station. The area closest to the station where weightage is given. तो हम इसको समझने के लिए बेसिकली हम नेक्स्ट देखेंगे. हमने हर एक पॉइंट को कनेक्ट करा. Like point 1 is connected to point 2, and point 2 is connected to point 3, point 3 is connected to point 4, and point 4 is connected to point 5, and point 5 is connected to point 6. Okay, then we have connected all the points together. Like 2 is connected to 6, 1 is connected to 6, 4 is connected to 6, and 3 is connected to 6. So all is connected, so it has formed a pentagon. Simple, like join each station by a straight line to create a triangulated network. So we have studied the basic, we know this how we do survey में हम क्या सीखे हैं, प्रिंसिपल कैसा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गेट मेजरमेंट पार्ट इन ट्रायंगुलेशन फॉर्म. तो हमने पार्ट बाय पार्ट कर दिया है. फिर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है. ऑल द ट्रायंगल्स इन बाइसेक्टर बाय द सेंटर. एज वी हैव सीन, इसका भी 90 डिग्री लिया गया है सेंटर से, इसका भी सेंटर से लिया गया, इसका भी सेंटर से लिया गया. सो ऑल हैज डन. सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ईच साइड ऑफ ईच ट्राइंगल. वी हैव ड्रॉन ए बाइसेक्टर to the each triangle by cutting the center of all the triangles, extended the bisector to meet the other bisector and the catchment boundary. So हम इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उसका एरिया को निकालने में हमारा मदद हो जाएगा. तो हम लोग एक न्यूमेरिकल से देखेंगे तो सबसे पहले आपको समझ जाएगा. तो हमको क्या लगेगा, नंबर ऑफ पॉलीगन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अभी हम क्या करना है कि जो हमारा एरिया है एज पी थिसिनियन पॉलीगन में हमने क्या सीखा कि द स्टेशन इज वेयर स्टेशन इन मार्क, तो उसका जो एरिया होता है इन्फ्लुएंस रहता है. तो हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, सिंपल से इस्तेमाल है समेशन ऑफ एन अपॉन लिमिट 1 इज पी आई इंटू ए आई अपॉन ए. तो ये हमारा फार्मूला है. ये फार्मूला को इस्तेमाल करा पी बार इज इक्वल टू P1 इंटू A1. तो हमारा P1 क्या है, स्टेशन 1. A1 हमारा क्या है, हमारा A1 है इज द नंबर ऑफ कैचमेंट एरियाज. जो हमारा एरिया जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली ऐड करेंगे P2 A2 प्लस Pn अपॉन An, और फिर अपॉन A1 प्लस A2 प्लस An हमने उसको इस्तेमाल करना है. तो हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग थिसेनियन पॉलीगन मेथड से हम लोग किसी एरिया का एवरेज रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं. तो लेट्स सी ए एग्जांपल. सो द एग्जांपल गिवन यूजिंग थिसेनियन पॉलीगन मेथड, फाइंड एवरेज रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट. द डेटा इज रेन गेज स्टेशन. टोटल कितना रेन गेज स्टेशन है, 5. A स्टेशन, B स्टेशन, C स्टेशन, D स्टेशन एंड E स्टेशन. सो पॉलीगन एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहला दिया हुआ है A स्टेशन का 40,
40, B का 45, C का 38, D का 30 and E का 43. And the precipitate in mm, what is precipitate? The rainfall. We can call precipitate as rainfall. So rainfall in mm is 30.8, 33.4, 34.6, 32.6 and 24.6. So this question is given. So to solve this question, you need to draw a table. So first on the table you will mark the rain gauge station. So we have the mark the rain gauge station A, B, C, D, E. Okay, and then polygon area, which is denoted by A in kilometer square, we have marked for a station A 40, we have plotted from B 45, C 38 and D 30 and E, and we have added. So the average is coming, addition is coming, sum is coming 193, and we all know the precipitation. So what is precipitation? Simple is that number of precipitation 30.8. okay, so for station A, then 33.4. so we have marked the precipitation in mm. Now what we have to do, we have to multiply A into P. As we know the formula, area into the rainfall station, both are influenced, so we will multiply. So 30.8 is multiplied by 40, the value is 1232, 1232. Similarly we have done 45 into 33.4, and we have then we have found the sum, that is 6085.6. now how can we find the average? Average is summation of A into P upon summation of A. We have already summation of A is there. Okay, so both the values, this value is divided by this value, and the average rainfall is 31.53 mm. So by using Thysanian polygon, you can easily find out the average rainfall area in the given hilly areas or any places. So by this method you can do this question. Next is isohethal method. What is isohethal method? Isohethal method, as we have already studied about contours. What is contour? Contour is an imaginary line. So in isohethal method is a line joining point of equal rainfall magnitude. Like if a point A is the rainfall is 1 and point B is also 2, then both according to the contour both will be matched. So if P1, P2 and Pn are the value of isoheads, and if A1, A2 and An-1 are the isohet areas respectively, then the mean precipitator of the overall catchment is given by, ये फार्मूला से हमारा वैल्यू आता है कि P bar is equal to 1 upon A summation of n minus 1 upon I limit I is equal to 1 AI upon into PI plus 1 upon 2. तो हम लोग इस फार्मूला को इस्तेमाल करके अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आइसोहेथल मेथड से हम कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल. So in this example we will be seeing we will be finding average rainfall over a catchment area using isohethal method. The isohethal centimeter is given as 12, 13, 14, 15, 16 and 17, and area कितना दिया हुआ है 22, 80, 110, 89 and 70, and average precipitate in that area is given in centimeter, that is 12.5, 13.5, 14.5, 15.5 and 16.5. So now what we have to draw a table. So we have to see this table very carefully, because this table अगर आप एक बार गलत करते हो तो आपका पूरा वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा. तो सबसे पहले you need to draw a table. In that isoheads which is in centimeter you will mark. So 12, 13, 14, 15, 16 and 17, there is a gap. Okay, so what is the gap? Now we will understand. So area between isoheads, there area between isoheads means कि जो एरिया रहता है between that, ठीक है. तो ये वाला एम्प्टी है, नीचे वाला एम्प्टी है. सो 12 एंड 13 के बीच में हमारा जो एरिया बिटवीन आइसोहेड्स कितना है 22. सिमिलरली 13 और 14 के बीच में हमारा कितना है 80, एंड 14 15 के बीच में कितना है 110, एंड 15 16 का 89 एंड 16 17 का 70. सो दिस इज एरिया गिवन बिटवीन आइसोहेड्स. मीन्स आइसोहेड्स के एरिया जो हमारा सेंट्रल बिटवीन होता है उसी का पार्ट, तो हमको क्या करना है ऐड कर देना है. तो हमारा ओवरऑल एरिया कितना हो जाएगा 371. ओके, वी हैव डिड सम ऑफ area between isoheads. Now what you have to do, average precipitation. तो average precipitation का value हमारा दे रखा है, तो we will write on the same line where area between isoheads has been given. So हमारा क्योंकि average precipitation दोनों पॉइंट के बीच में कंसिडर करा गया है, ठीक है. सो at the point 22 जहाँ पे लिखा हो उसके सीधे हम लिखेंगे
12.5, and similarly 13.5, 14.5, 15.5 and 16.5. Now what we will do, we will multiply it. So we will multiply 22 into 12.5, so the value will be around 275. 80 into 13.5. Then we will do again what we have done, A into P1 plus P2 upon 2. We have used this formula, the given formula, and upside we have done, and the value has occurred 5484.5. So by using this formula, we will be dividing and we will get the average rainfall in the particular given area, that is 14.78. So by isoHED method, we can easily solve a numerical. When you will try this type of numerical, very easy. You just need to memorize the given formula. So when you will practice, you will come to know the value. So how will you find the average rainfall area? By arithmetic mean method, Thyssendian polygon method, and isoHEDER method. Next one is, so first of all we should know what is runoff. Okay, so runoff means the water, okay, after rain on the surface of the earth, it flows to the any of natural streams, like it will flow to a river, it will flow to a lake, or it will flow to a pond. So runoff can be defined as the portion of the precipitate that makes it way towards the river or ocean, surface or subsurface flow. Okay, जैसे कि we know the example what is runoff. As we all know, in Bihar, which is affected by flood right now, most of the 15 districts by two rivers, that is river Kosi and river Gandak. So these are overflowing. The water through rainfall is coming to the cities, and which is going to running on the surface or below the surface of the earth, which is destroying the property and lives of the people staying in that area. So that is known as a runoff. Like whenever you have a rainfall, and if you don't have a proper drainage, the water will log, and that will create a nuisance. So that's very much important, that you must have a proper drainage. So if you have a proper drainage or a slope, there will be a runoff occurred. So we will be studying about what is runoff. So we will be seeing this tree diagram. So what is total precipitation, what is total rainfall, precipitation in the form of rain or in the form of snow, तो उसको हम लोग बोलते हैं total precipitation. Next is precipitation excess. If you have a precipitation in excess, means ज़्यादा बारिश होती है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है. Next is infiltration and abstraction. So precipitation excess causes surface runoff. Okay, so surface runoff from to SSR. What is SSR? Surface runoff, subsurface runoff. Okay, from to surface runoff, and then it's direct runoff. So and first of all, we should know the water flows on the surface of the earth or below surface of the earth also, because when there will be a huge rain, too much rain, excess rain, then this problem occurs, that is total runoff. So this all concludes to a runoff. Okay, so what is ground water runoff, delay, subsurface runoff, base flow, what is all this, deep percolation, so which contributes to runoff. So the basic term of runoff is the water makes its way towards the river or ocean from the surface or subsurface is known as a runoff. We can see with the help of अब जब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं types of runoff. तो पहला होता है surface runoff, means कि the water flow from the surface, like when you receive a rainfall on the surface, instead of percolating, it will log, and it won't log, it will flow from the surface to the make it way to the nearby river or a lake. So that is known as a surface runoff. Okay, next is subsurface runoff. Subsurface runoff, what is that? Amount of rainfall first enter into the soil. It will enter into the soil and then flows laterally towards the stream without joining a water table. Like it won't percolate deeply, but as soon as goes to the soil, it will pass inside the soil. Lateral movement will be there. That is known as a subsurface runoff. Next is base flow. Base flow is also a delayed flow, where water that makes the groundwater table and join stream or ocean, very slow movement and takes month or year to reach stream. Like when sometimes happen, what when you have excess amount of rainfall, it will percolate and it will have a base flow, it will join with the water table and it will make it way towards the ocean or a river. So these are the types of runoff. Next one is factor affecting runoff. What are the factors affecting runoff? What is factor कि कैसे उसको हानि पहुंचा रहा है? Like first one is climatic factor. So it is very much important कि which type of climate is available. Like as you can see in India, most of the 4 to 5 states like Bihar, Kerala,
and Assam and Mumbai, Maharashtra. These 4 states are being affected by flood. So the climatic factor is very much important. So where we will get types of precipitation. Which type of precipitation is there? Rain and snowfall. Next we will be seeing rainfall intensity. How much intensity is there in the rainfall? Like it is raining continuously, or it is raining means alternatively, like there is a gap between hour and 2 hours or 5. There is a so we should know the rainfall intensity. So where there is a high rainfall intensity, there is likely to cause more runoff. Next is duration of rainfall, how much time has been rained. Next is rainfall distribution, like how the water which is coming to the surface, how it is distributed to the nearby areas. If it's not distributed, it will cause waterlogging, and it can cause a flood also. Then is direction of prevailing wind. It also depends on the wind also, whether the rainfall will stay in the particular place or it will go to other place, because the wind takes the rain to some other places also. Next is other climatic factors like temperature, runoff, which depends on other temperature, like temperature, wind velocity, relative humidity, annual rainfall affect in initial loss of precipitation, and there is affecting runoff. So what affects runoff? This climatic factors and prevailing wind also affects runoff. Like if there is a higher intensity of rainfall, there will be higher runoff also. So these are the factors which affects the runoff. Next one is साइकोग्राफिक फैक्टर. सो साइकोग्राफिक फैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे? वाटर सेट, लाइक देयर इज अ फैन शेप्ड एलोंगेटेड एंड देन ब्रॉड क्वेश्चन. सो इसमें क्या है कि हमारा क्या है, वाटर सेट है, मीन्स हमारा जहाँ से वाटर स्टोर होता है. लार्जर द वाटर सेट, लॉन्गर टाइम नीडेड टू डिलीवर रन ऑफ. लाइक ये हमारा जो ट्रिब्यूटरीज दिया हुआ है, वहाँ से हमारा रन ऑफ होता है, वो हमारा आइदर इट टेक्स टू द नेचुरल स्ट्रीम और लाइक ए रिवर. सो दिस आर द गिवन शेप ऑफ द साइकोग्राफिक फैक्टर ऑफ वाटर शेड. Okay, next one is catchment area. What is catchment area? The area where the surface runoff flows to the dam or a river through the tributaries, like as we have seen the fan shape. So these tributaries through which the water makes its way towards the natural stream, that is known as a catchment area. Where water is stored, that is known as a catchment area. Next is okay, how the runoff is calculated. So runoff can be calculated by English method, Strange method, Binnis method, runoff coefficient method. So these 4 method is used to find calculation of runoff. So next we will see first one is we will see English method. So this method is named by a Englishman that he developed a formula for catchment in the West Maharashtra. Where he found this formula? In West Maharashtra, and divided the area into घाट्स. वी ऑल नो हिंदी में उसको क्या बोला था? घाट एरिया, नॉन घाट एरिया. जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है उसको, और जहाँ पे ज़्यादा पानी स्टोर होता है उसको घाट एरिया बोलते हैं, और नॉन घाट एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो बॉम्बे में इसको हम लोग ये साइंटिस्ट ने किया था. तो घाट एरिया का जो फार्मूला होगा, R इज इक्वल टू 0.85 P माइनस 30.5. पी क्या है? हमारा रेनफॉल है. तो हम इसमें हम लोग क्या निकाल देंगे? कैचमेंट एरिया से हम लोग क्या निकाल देंगे? उसका वैल्यू निकाल देंगे. पी का वैल्यू दिया रहेगा वेयर द पी इज मोर देन 200 सेंटीमीटर. घाट एरिया का जो एवरेज रेनफॉल जो रहेगा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घाट एरिया बोलते हैं. इस डायग्राम को, ये फार्मूला को याद रखेंगे. नेक्स्ट है प्लेन एरिया इन वाटर शैडो रीजन. प्लेन एरिया हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग अनदर नेम से जानते हैं नॉन घाट एरिया, वेयर पी इज लेस देन 200 सेंटीमीटर. तो हमारा यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा, R इज इक्वल टू पी इंटू पी माइनस 17.8 अपॉन 254. ये हमारा जो फार्मूला है, ये जो साइंटिस्ट ने डायरेक्टली पुट किया है, इसमें हम लोग क्या करना है? हमको डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इंग्लिश मेथड से आप यू कैन फाइंड द कैलकुलेशन. ठीक है, तो हम आप कैलकुलेट क्या कर सकते हो? रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ रन ऑफ आया है. ठीक है, तो पी है क्या है? रेनफॉल है. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंज कर्व. सो स्ट्रेंज कर्व फर्दर क्लासिफाइड एज ए कैचमेंट इन ए गुड, बैड और एवरेज, और इन ए वेट, डैम्प और ड्राई. सो आप देख सकते हैं हमारा 2 कर्व है, कर्व 1 एंड कर्व 2. सो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है कि किस में दिया रहेगा? वेट मीन्स कि उसमें कंटिन्यूस देयर इज अ मॉइस्चर कंटेंट. देन एक डैम्प होता है जिसमें हमारा क्या होता है? देयर इज रेनफॉल बट इट इज डैम्प. एंड नेक्स्ट वन इज ड्राई.
So this area, this known as a strange curve, and in this strange curve there are also divided good, average और bad. क्या क्या होता है, yearly runoff in mm and yearly rainfall in सेंटीमीटर, कि कितना रेनफॉल हुआ है, कितना रन ऑफ हुआ है. ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनता है किसके अगेंस्ट बनता है, रेनफॉल और रन ऑफ के अगेंस्ट. तो हमारा जो सही रेनफॉल, सही कर्व कौन सा होगा, विच हैव वेट इन कनेक्शन डैम्प एंड ड्राई. सिमिलरली here which is called good, which value is more than 800, as you can see this connection. So this is good. The graph has been drawn between runoff and rainfall. तो हम लोग कैसे रन ऑफ का कोएफिशिएंट को कैसे माप सकते हैं, उसका वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू KP. तो R क्या है, हमारा रन ऑफ है. ठीक है, तो हमारा P क्या दिया है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर. वी आर फाइंडिंग रेनफॉल इन सेंटीमीटर. K क्या है, रन ऑफ कोएफिशिएंट. तो रन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गिवन एरियाज इज गिवन बाय IS स्टैंडर्ड. जो हमारा था फॉरेस्ट का कितना वैल्यूज लिया जाता है, 0.05 से लेकर 0.02 तक, एज यू हैव सीन. देन रोड पेमेंट के लिए 0.85, अर्बन के लिए 0.32, 0.5 के बीच में, पार्क एंड फार्म से 0.05 से लेकर 0.3 तक, एंड कॉमन एंड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कितना हो, 0.9. तो ये हमारा क्या है, कमर्शियल एरिया के लिए है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट है बिनीस कर्व. तो बिनीस कर्व में हमको सिंपल से बात है कि हमारा जो एरिया दिया रहा था बिनीस टेबल में, हम लोग भी फाइंड करते हैं कि क्या फाइंड करते हैं कि ये भी हमारा जो साइंटिस्ट था वेस्ट महाराष्ट्र में शूट किया था, और उससे हमने कैलकुलेट करा था कि एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है इन द कैचमेंट एरिया, रन ऑफ कितना होता है. अगर 500 है तो उसका जो रन ऑफ कितना होगा एनुअली, 15% होगा. 11 मैक्सिमम कितना था, 1100, तो वहाँ कितना रन ऑफ हुआ था, 40%. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय बिनी परसेंटेज. द परसेंटेज ऑफ द रन ऑफ इज गिवन. सो MCQ क्वेश्चन में ये बेसिकली आता है कि बिनी परसेंटेज से अगर रेनफॉल हमारा था 1100 है तो कितना रन ऑफ होगा, तो 40 होगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस. Next one is maximum flood discharge. What is maximum flood discharge? Maximum flood discharge is the concentration of flow from a catchment area. Like एक catchment area है, वहाँ से कितना होता है. ठीक है, इसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में, ना मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और क्यूसेक में. ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, जैसे कि हमारा बिहार में भी बाढ़ आया हुआ है, तो कैसे आया हुआ है, वहाँ पे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो अफेक्ट करेगा. तो मोस्टली इट अफेक्ट्स लाइक हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, देयर इज अ कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, नेक्स्ट है लेट रेनी सीजन की. जो हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सर्वे किया था, जो सोचा गया था कि मानसून जल्दी आ जाएगा, लेकिन लेट रेन आने की वजह से भी हेवी फ्लड कॉसिंग हो सकता है. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्प्रेड रेनफॉल इन द लार्ज एक्सटेंट एरिया ऑफ CA. तो CA क्या होता है, कल्टिवेटेड एरिया, मीन्स कि हमारा वहाँ पे क्या है. नेक्स्ट है फैन और वन सेप कैचमेंट एरिया. जो फैन और वन सेप जो होता है, वहाँ पे जो हम ट्रिब्यूटरी बना रहा था, तो आसानी से वो रिवर और उसमें जाता है, तो उसकी वाटर लेवल बढ़ जाती है. दैट वाटर क्रॉसेस कैसे बढ़ा रहा है, सिंपल इज दैट. नेक्स्ट स्टीप स्लोप, रॉकी सॉइल, देन डाउन स्ट्रीम, डाउन डायरेक्शन ऑफ विंड. सो दिस आर द फैक्टर अफेक्टिंग द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज ऑफ द गिवन एरिया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमने अभी इस टॉपिक में क्या क्या देखा. वी हैव सीन अबाउट हाइड्रोलॉजी, वी हैव सीन अबाउट द एवरेज एनुअल रेनफॉल. इसमें हमने क्या देखा, 3 मेथड देखा, अर्थमेटिक मीन मेथड, थीसियन, पॉलीगन एंड आइसोहेड्रल. और नेक्स्ट हमने देखा रन ऑफ. द रन ऑफ में भी इंग्लिश मेथड देखा, स्ट्रेंज का, बिनी का. ठीक है, तो इस समय हमने क्या देखा, कैलकुलेशन देखा, कैसे करना है, क्या सीखना. सो इन दिस हमने वी हैव स्टडीड अबाउट विच बुक आई हैव रेफर्ड. आई हैव रेफर्ड डॉक्टर BC पुनामिया बुक एंड संतोष कुमार ग बुक, एंड आई हैव ऑल्सो रेफर्ड google.com to prepare this slide. ठीक है, अगर if you have any doubt in this topic, we will be dealing in online doubt session. Thank you.